Hello everyone. So today's our topic is classification of mandibular fracture according to presence and absence of teeth. So छोटा सा है 4 मिनट का है जल्दी जल्दी देख लेना. Bye. So today we are studying classification of mandibular fracture according to presence and absence of teeth in relation to the fracture line. Okay. So this classification is KAZANJIAN and converse classification. It has 3 classes: class 1, class 2, class 3. Okay, तो 3 class में ये divided है, classified है. First class, when the teeth are present on both sides of the fracture line. This is the fracture line and इसके दोनों side में teeth present है तब. So if adequate number of teeth are present और टिथ ऑफ एडिक्वेट शेप एंड स्टेबिलिटी आर प्रेजेंट, तो मैनेजमेंट किस तरीके से होगा? वो फ्रैक्चर लाइन का डायरेक्ट वायरिंग, कंटिन्यूस और मल्टीपल लूप, इंटरडेंटल आइलेट और प्रीफैब्रिकेटेड आर्च पास. ये सारे मेथड से हम लोग यूज़ करते हैं. वेयर एज अगर टिथ का नंबर इनएडिक्वेट हुआ तो मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा. अगर टिथ का शेप अनसूटेबल हुआ, उसकी स्टेबिलिटी अनसूटेबल हुई, तो लेटरल कंप्रेशन स्प्लिंट, आर्च बार्स, कास्ट मेटल कैप स्प्लिंट्स, ये सारे हम यूज़ करते हैं. नाउ क्लास 2, व्हेन टिथ आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द फ्रैक्चर लाइन. दिस इज अ फ्रैक्चर लाइन, उसके सिर्फ एक साइड पे टिथ प्रेजेंट है. सो इसमें 2 केस है: शॉर्ट इडेंचुलस पोस्टीरियर सेगमेंट और long edentulous posterior segment. Okay, so this is the diagram representing short edentulous posterior segment. Here it is long edentulous posterior segment. Now in short edentulous posterior segment, it could be favorable or unfavorable. Favorable और unfavorable हमने previous lecture में पढ़ा था कि हम कैसे decide करते हैं according to the displacement of the fragments in respect to the muscle pull. Now favorable, in favorable type, immobilization of main part is done by interdental wiring or arch bar, whereas in unfavorable the management is open reduction with direct fixation. Okay, whereas in long edentulous posterior fragments, here it could be without displacement or with displacement. This fracture line can cause without displacement or with displacement. In without displacement, we do conservative treatment like we studied before, and then with displacement, we do open reduction and fixation. Here also we did open reduction and direct fixation, and here we do open reduction and fixation. Now in class 3, when both the fragments on each side of the fragment line are edentulous. When both the fragments on each side of the fragment line is edentulous, then it is classified into class 3. So here fracture could be simple or compound. In simple, it could be favorable or unfavorable based on the displacement of the fragment. In favorable, the management is simple gunning splint, and in unfavorable, we do open reduction and fixation. Whereas in compound fracture, in favorable, we do simple gunning type splint, and in compound unfavorable, we do surgical innervation.